Good evening, I'm Pallavi Ghosh and you're watching the Super Saturday Debate with me. Okay, it's a big story that we are going to be focusing on is a decision which was taken by the Assam cabinet. Is Assam too now going to be next in line after Uttarakhand to implement the UCC? But what really happened was that earlier today, the Assam cabinet took a big step. In fact, yesterday the decision was taken where it repealed the Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935. Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that the decision is aimed at prohibiting child marriages. But of course, it has given rise to a huge uproar. The opposition parties have accused the government of trying to stoke trouble and divide the people and target the minority population. The AIUDF, the Samajwadi Party and the Congress has called this discriminatory and a bid to instigate the Muslims. However, the BJP has given it a thumbs up, saying that it's a decision which will ensure equal rights for all. Is Assam now a step closer to implementing the Uniform Civil Code? That is the big question which we are going to be discussing tonight with our guests. ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा, एक्ट कितने ही बनाते रहे। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं। Overall, it is a discriminatory decision of the cabinet of Assam. Okay, let's head straight to all our special guests this evening. Mr. Kishore Upadhyay, he's a spokesperson of the BJP Assam. Jairul Islam, he's spokesperson of the AIUDF. Deshratan Nigam, he's a political analyst. And Rashid Sharif, he's the president of the SIMPLB. Thank you very much to all of you for joining me this evening. I'm going to go straight across to Mr. Kishore Upadhyay. Mr. Upadhyay, the criticisms which are coming in from, say, the SP, the Congress and the AUDF is that this is yet another attempt to divide the people. And you are encroaching on the personal rights or the religious rights of a specific community. Your response to that? The people, firstly, I would like to thank CNN for accommodating me in your show. Secondly, first of all, these people who are accusing Bharatiya Janata Party for dividing the nation, they should first know that they have been dividing the country for last 70-75 years. Repeatedly, the Supreme Court, in several judgments, tens of judgments are there, where Supreme Court also advising government to bring Uniform Civil Code. But we are not talking about a Uniform Civil Code. We are talking about child right. The government under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma take a right decision, because in Assam, infant mortality rate is higher than national average. Secondly, maternal mortality rate also is a matter of concern. So if you allow to child marriage, then these kind of things will keep happening. That is why Dr. Himanta Biswa Sarma and Bharatiya Janata Party government has decided there should not be any discrimination towards Muslim child, Muslim mothers. So, to uniform to all these acts, to make a uniformity with the Hindu people or other people, this act has been repealed. Now, if you go to the Section 8, Section 9, Section 10 of Muslim Marriage and Divorce Registration Act, you see, there is provision for minor marriage. But subsequently in 2006, there is an act which prohibits child marriage, and child marriage is Section 2A. If you go, the child male has not completed his 20 years of age, and if female, then it should not be below the 18 years. But if you see in Section 8 of this act, they have provided
if the application be for the registration at a marriage by the parties to the marriage jointly provided, if Okay. bride Yeah. or both be minors, application shall be made. So there is a provision for minor marriage. So we cannot remain a silent Okay. spectator. Okay. So government has to see all those things. So that is why our government has decided to repeal this Muslim marriage and registration divorce registration act, Okay. and all the people in the state should come under special marriage. Okay. Mr. Upadhyay, I'm just going to come back to you. Mr. Islam, I really want to know from you this, that why should one be suspicious? I mean, you know, at the end of the day, if it's going to improve the social structure, if it's going to avoid child marriages as the government is claiming this decision will, then don't you think this is something which should be appreciated and lauded? Why should you see this as an interference into your religious beliefs? It's totally interference is Muslim personal law, and my BJP leader who is speaking about this, that the act is repealed for child marriage. For his kind information and for kind information to BJP government, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चाइल्ड मैरिज को ना हो इसीलिए इस एक्ट था। जो काजी मैरिज करता था या डिवोर्स करता था, अगर कोई लड़का लड़की काजी के पास जाता है शादी करने के लिए, तो काजी उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करता है कि ये एज पर इंडियन लॉ ये 18 इयर्स और 21 इयर्स हुआ कि नहीं लड़का लड़की, उसके बाद ही वो मैरिज करता था। बीजेपी का प्रतिनिधि क्या बोल रहा है मेरे को पता नहीं है। और दूसरी बात, मुसलमान को शादी करने के लिए कोई एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत है नहीं है। शादी मुसलमान में होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्रपोजल और एक्सेप्ट। काजी का रोल उसमें यह होता है कि जो शादियां होता है वो प्रॉपर वे हुआ कि नहीं है, एज पर शरीयत एंड एज पर इंडियन लॉ, इस हिसाब से हुआ कि नहीं। काजी के साथ दो वकील भी रहता है, वो मतलब उसको विटनेस बोलता है, वो भी इसको इंश्योर करता है कि ये एज पर लॉ एज पर शरीयत हुआ ही कि नहीं। दूसरी बात, ये जो एक्ट था 1935 मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, इस एक्ट ने जो लड़के के साथ शादी करता है उसका टोटल लाइफ एंड प्रॉपर्टी का गारंटी था। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। लॉजिक क्या दिया है? सबसे वीक लॉजिक दिया है कि ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देते हैं। अरे साहब जी, ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा नहीं देते थे, ये चाइल्ड मैरिज ना हो इसीलिए ये एक्ट और ये काजी था। ओके। अभी आप लोग इसको ले जाके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऊपर थोप दिए हैं। मतलब वो जो रजिस्ट्रार है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में, वो देखेगा। मेरे को आप एक बात बताइए, मुस्लिम मैरिज का जो कायदा कानून तौर तरीका, वो उस रजिस्ट्रार को क्या पता है? दूसरी तीसरी बात यह है, ये देश सेकुलर कंट्री है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट है, आर्टिकल 25 आपको राइट्स दिया है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। अभी कोई रिलीजन आपका अपना शादी का तौर तरीका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तय करेगा, वो तय करेगा। ये देश है, ये देश डाइवर्सिटी का देश है। ये यूसीसी के बात बोल रहे हैं ना, बोले यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए सबको। अगर सब में यूनिफॉर्मिटी होना है तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं असम में यूसीसी अगर लागू करेंगे तो यहां से ट्राइबल लोग को हम छोड़ देंगे, यहां से उस लोग को हम बाहर रखेंगे। अगर इनको बाहर ही रखना है तो यूनिफॉर्मिटी कहां है? Okay. और इस देश में जब 22 लॉ कमीशन क्लियर, I'll just come back to you. I'll just have to get in my other two guests as well. I'm going to go straight across to Mr. Deshathan Nigam. Mr. Nigam, even in the case of Uttarakhand, when the UCC was implemented, that there was a concern which was raised, say, among the tribal community and the Adivasis, who said that we have special, say, for example, property rights. We have some special rights that we enjoy. A UCC cannot address our special concerns. Do you think the point which is being raised by Mr. Islam is to a very great extent actually correct and genuine? I mean, how do you reassure them? Perhaps UCC is not the way to reassure them that this is going to be inclusive. Pallavi, let us be very clear. This law is about gender injustice being meted out to women and children, the girls, and inequality.
It has nothing to do with religion. And when a co-panelist says they have to, the Qazis verify the age of 18 and 21 under the Indian law, then why do they have an objection in this? This itself verifies and ensures that they should not be girl should not be less than 18 years and a man should not be less than 21 years. What objection do they have? I fail to understand. So this, in fact, there are huge examples where the children were getting married, the young girls were getting married. And about the mortality rate, my co-panelists told me about, there are immense amount of research that the infant mortality rate and the maternal mortality rate really goes very high. And the children are getting married. There are huge examples all over India which is happening. It happens in Hindus, but there is a law to prohibit that. They violate the law. There is a process of judicial redress and the punishment out there. So here there is no law. A law has been brought in to redress this particular issue. Now, secondly, let us talk about tribals. In all the tribal communities in India, the women have more rights than men. If you look at the Northeast and many other communities where men are happy that the matrilineal progression takes place of the property, men have no objection to that. And they are very happy with that. And therefore, men do not want to, take the rights of a woman on themselves. So they are uncomparable. You can't compare the two. Therefore, tribals have to be dealt with very differently culturally. And here it is personal affairs are being, nobody is saying you change your contract of marriage in Muslims. No. Would any of these people like their sisters and others to go through halala? No. Nobody would like. The equal adoption rights, equal custody rights, inheritance rights. This is the modern day, and a lot of Islamic countries have also changed their laws accordingly. And I can name those countries also. But the fact is the politics has to be done out here. And in the name of minority and victim card, they don't want any reformation. So why should they have a problem if Qazi was doing and verifying 18 and 21 years of age? Now it has been done in the Special Marriage Act, where it will be verified by the government servants or constitutionally, administratively appointed people. Okay. So that objection I cannot understand. Okay, I'm going to get in one more word from Mr. Sharif, Mr. Rashid Sharif. रशीद जी, आपने सुना होगा जो मिस्टर देशरत्न निगम ने कहा, सबने कहा, इन सब का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि हम आपके रिलीजन में दखल करना चाहते हैं. सिर्फ जो बाल विवाह है, व्हाट इज द चाइल्ड मैरिज, उसके खिलाफ ये एक एक्शन होगा, क्योंकि ये सोशल चेंज किया जा रहा है. और इस सोशल चेंज से लेके सामाजिक परिवर्तन की जो बात हम करते हैं, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ये लोगों का चेंज नहीं है पल्लवी जी. ये लोगों को खाली मुसलमानों को हिरासमेंट होना. ये लोग है सो ये सोचे हुए है कि किस तरीके से शरीयत में दखल देना. हमारे पास शरीयत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पल्लवी जी, इसके हटके हम चलते नहीं. कुरान हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम चलते नहीं. और हमारे पास कंप्लीट, हम समझते हैं कि हमारा मजहब बिल्कुल कंप्लीट है. अगर आप जैसा कि आसाम में जो हमारे सीएम साहब जो करना चाह रहे हैं, उनकी सोच देखिए आप. हमारे पूरे मदरसे बंद कर दिए, वो तकरीबन 600 के ऊपर मदरसे बंद कर दिए. हाँ चलिए बंद करे आप, 98% तो है सो बिल्कुल बाहर है. उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, जब मदरसे बंद करे, वहां पे है सो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही, आपको साइंस नहीं पढ़ाई जा रही, आपको कंप्यूटर नहीं दे रहे हैं, आपको 2% सिर्फ मुसलमान है सो मदरसों में पढ़ रहे. ठीक है, बड़ी हमदर्दी आपको है, तो 98% बच्चों के लिए आप क्या करें? Mr. Upadhyay, would you want to respond to this? Because he's saying कि आप मदरसा बंद कर रहे हो. Mr. Upadhyay, a quick word because we know we are short on time. So अगर आप briefly बोले तो हम सबको चांस दें. हाँ बोलिए. हाँ, पहला बात तो देखिए, माद्रासा का जो बात इन्होंने उठाया, माद्रासा में ये लोग जब कुरान पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट एफोर्ड रिलीजियस प्रीचिंग बाय द गवर्नमेंट फंड. सरकारी पैसा से रिलीजियस प्रीचिंग नहीं सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है. इसमें हम लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं, इसलिए तो माद्रासा बंद किया है. दूसरी बात, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि there are many schools across the country where, for example, the Ramayana is also being taught as a part of the syllabus. So the रामायण रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है. देखिए यही तो प्रॉब्लम है. कुरान और अब रामायण में कंपेयर कर रहे हैं. रामायण और कुरान
आपको रामायण तो एक अलग विषय है। आपको रामायण अगर आपको धार्मिक ग्रंथ में डालेंगे तो नहीं, ये तो वे ऑफ लाइफ है। Okay. अब सुप्रीम कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट में रामायण और कुरान एक नहीं है। दूसरा बात है, ये लोग संविधान मान रहे हैं, तो संविधान संविधान से बोला गया है कि अभी जो संविधान से निकला हुआ जो लॉज है, वो लॉज प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड मैरिज, और इनका जो शरिया लॉ है, अब मैं आपको अभी और एक बार इनको एक पढ़ा देता हूं। ब्रीफली बोलिए ना मिस्टर उपाध्याय, मुझे बाकी लोगों को भी टाइम देना है ना। ठीक है, मैं शॉर्टली बोल रहा हूं कि सेक्शन 10 में अगर आप देखेंगी सेक्शन 10, सेक्शन 10, every entry in a register kept under their act shall be signed the follow by the parties to the marriage, provided that if a woman be parda nasin, the entry may be signed on behalf of her authority, और जो in case of which woman is represented by a वकील, 2 witnesses, इनको जब माइनर होते हैं they should be represented by someone। अब चिंता कीजिए, अपना शादी का डिसीजन वो लोग खुद नहीं ले पाते, उनका कोई आपने अपना पॉइंट रखा। Mr. Nigam, do you think at the core of all this is actually an element of distrust? The two sides don't seem to be trusting each other. It is not about trust. It is about upholding human values and constitutional values. And the Islamic countries are also showing the way. The changes in Saudi Arabia which are taking place, these Maulanas in India are oblivious of all that. They want to have that politics of minority and playing victim card. That cannot be done. This is about gender injustice and inequality, and nothing more, nothing less. And it has to be seen from that perspective only. Okay. Mr. Islam, when everyone is talking about women empowerment, women rights, then why is it that you have a problem in case this act is only the thing that came out of the cabinet meeting was that we've repealed this act because we really want to avoid or put a stop to child marriage. So what's the problem there? इस एक्ट को रिपील करके कौन सा वुमेन एम्पायर हो रहे हैं? आप क्या मौका कहना देंगे चाहता तो है बीजेपी? क्या दिखाना चाहती है? कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है। इस पे क्लियर मैसेज है, बीजेपी का एक ही एजेंडा है, कैसे इंडियन मुस्लिम को मेंटली एंड फिजिकली हरास किया जाए, यही उनका एजेंडा है। आप ये लोग जो बोल रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कर रहा है, अरे चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए नहीं है, मैं आपको बता दिया हूं सीधा। अच्छा। दूसरी बात, मेरा एक को पैनलिस्ट बोल रहा है कि अगर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इसको नहीं है तो इसको हटा दिया तो क्या प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम इसलिए है कि आप हमारा शरिया के अंदर हाथ डाल रहे हो। यहां पे इंडिया में 2 ही तरीका है शादी एंड डिवोर्स का, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड हिंदू पर्सनल लॉ। तो अब हिंदू पर्सनल लॉ में भी बहुत सारा है प्रॉब्लम्स। इस आसाम में और बंगाल में जो शादी ब्याह होता है वो दया भगा के हिसाब से होता है, नॉर्थ इंडिया और बाकी पूरा इंडिया में होता है, वहां पे भी प्रॉब्लम है सर। सेम फील्ड में नहीं हो सकता लेकिन साउथ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है सर। आपने अपना पॉइंट रखा। We really have to wrap up this discussion. We have to. This is an ongoing developing story because we have to wait officially for the Assam government to actually bring in UCC on the floor of the House after Uttarakhand. The UCC is something which is the state government is very keen to bring on. Most probably all BJP ruled states will be doing that. But for this evening, thank you very much, Mr. Upadhyay. Thank you very much, Mr. Islam, Mr. Deshrathan Begum, as well as Mr. Rashid Sharif. So this has been a top story and a big development which came in from the cabinet meeting today.